إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. This is Engineer Asawad Shah introducing you the Highway Engineering lecture number 2, and let's get back towards this topic, techniques of pavement, which was left out in the first lecture. So it may be considerably reduced by the correct option is combination of all of the above. So what is compaction of soil, stabilization of soil? Let's discuss that. Compaction में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो हमारा मकसद क्या होता है, ताकि हमारे साथ बिल्डिंग्स हो गए, रोड हो गए, रनवे हो गए, एयरपोर्ट्स के पार्किंग लॉट हो गए, एक्सटर्नल सर्विसेज के बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ में, वो हमारे साथ उसमें सेटलमेंट ना हो जाए, उसको हम उससे रोक लें, क्योंकि इससे हमारे साथ प्री मेच्योर पेमेंट फेलेवर आती है अगर हम पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिपेयर करना और सब कुछ करना बड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। और सॉइल कंपैक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉइल स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, ये केमिकल और फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और ये सब तरीक़ों से हम इसको करते टेक्निक से करते हैं, ताकि इससे हम कमज़ोर सॉइल की स्टेबिलिटी को वो मजबूत कर सकें, ठीक है, ताकि इससे हम अपने इंजीनियरिंग के मकासद हासिल कर सकें, ठीक है। टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ वीक सॉइल्स, तो जो कमज़ोर सॉइल होते हैं उसको हम मजबूत कर सकें, ताकि इससे हम इंजीनियरिंग मकासद हासिल कर सकें, जैसे मतलब बिल्डिंग्स बनाना, उसके ऊपर रनवे बनाना, और फिर उसके ऊपर मतलब हाईवे बनाना, कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ बनाना या सड़कें बनाना, ठीक है। तो इसके बाद स्टेबलाइजेशन सॉइल हो जाती है, फिर उसको हम कम्पैक्ट करते हैं। कम्पैक्शन में हमारे साथ CBR, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो को देखते हैं, उसकी परसेंटेज हम निकालते हैं, कितना परसेंट हम उसको कम्पैक्ट करते हैं, या आप लोग की टास्क है ताकि आप लोग कर ले, उसकी CBR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या कितने परसेंट तक हम उसको हम कम्पैक्ट करेंगे, दैट्स अप टू यू, राइट। आई नो दैट बिकॉज आई वर्क आउट इनसाइड। सो द पोज़ोलैनिक रिलेशन बिटवीन द स्टेबलाइजर जो कि बाइंड इन सॉइल पार्टिकल्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टेबलाइज सॉफ्ट सॉइल। जो सॉइल सॉफ्ट होता है, जो कमज़ोर होता है, उससे हम उसको क्या करते हैं, चाहे अगर फिजिकल मेथड्स हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, combined techniques, we're gonna have one goal in mind: to attain stability, to provide stability to a weak side. इस केस में केमिकल्स प्रोवाइड किया जा रहा है सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। इस केस में भी सॉइल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये ड्रेनेज ऑफ सॉइल है, सॉइल में ड्रेनेज हो रही है, ठीक है, ये भी ड्रेनेज ऑफ सॉइल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। ये हम रोड्स के लिए ड्रेनेज बनाते हैं साइड पे, ठीक है, जिसको हाईवे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है इन इट्स डिज़ाइन, ठीक है, ताकि इसमें पानी चला जाए, ठीक है। तो जो ड्रेनेज है वो क्या करता है, रैपिडली एक्सेस वाटर लीव्स द सॉइल। पानी जो है हाउ रैपिडली एक्सेस वाटर लीव्स द सॉइल, ताकि कितने जल्दी जो ज़्यादा पानी होता है सॉइल में उसको ऊपर से छोड़ दे और पानी नीचे चला जाए, बाय रन ऑफ और इंटरनल ड्रेनेज, अंदर से अंदर चला जाए। ड्रेनेज कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द डाउनवर्ड बट आल्सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल प्रोफाइल, मतलब जो सॉइल में नीचे जो मूवमेंट होती है, ठीक है, या जो ऊपर मूवमेंट होती है, उसको भी हम इससे बयान कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल प्रोफाइल होता है, ठीक है। अब इस केस में देखिए यहाँ पे जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ड्रेनेज हो रही है, ठीक है, और पानी क्या करता है, जो बारिश का पानी होता है वो पौधों पे आता है, ज़मीन पे आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़मीन में पड़ता है, ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता जो है कितनी जल्दी वो पानी जो है वो पानी फिर आहिस्ता आहिस्ता बाज़ केसेस में बहुत जल्दी, बाज़ केसेस में उस मट्टी को क्या करता है, छोड़ जाता है, नीचे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं रन ऑफ। एक सरफेस रन ऑफ होता है,
इंटरनल ड्रेनेज इसको हम कहते हैं, या इंटरनल रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ। तो जब सरफेस के ऊपर से पानी जाता है, बारिश का पानी, तो उसको हम रन ऑफ कहते हैं। जिस रेन वाटर मोमेंट्स on the top surface of the soil is called runoff, surface runoff on soil, right? Similarly for roads, फिर इसमें internal drainage भी होती है। फिर drainage डाउनवर्ड मूवमेंट्स को भी डिफाइन करता है, अपवर्ड मूवमेंट्स को भी डिफाइन करता है सॉइल प्रोफाइल में। तो पेवमेंट की थिकनेस जो है वो कम होती है, कंपैक्शन ऑफ सॉइल की वजह से भी, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल की वजह से भी, ड्रेनेज ऑफ सॉइल की वजह से भी, तीनों की वजह से इस पे इफेक्ट्स भी आते हैं और ये कम होती है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 6। प्लानिंग ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। So correct answer is all of the above. Whenever we will study traffic engineering, so we will do always the plannings, how to construct a road, how to construct a traffic system, right? How to construct roundabouts, how to construct highways, how to construct underground, overhead bridges, and similarly to construct that, to do the planning, we need the design. And we need the application of control devices that may include the specifications, designs, also in traffic characteristics where we need a lot of traffic, where we not. So we will do analysis. For analysis, you should be learning these skills from me. You should be learning these skills and attributes and skills from me to be a good assistant director, to be SDOs, to be assistant manager and clients. Forget about the consultants and contractors. So similarly, we need to study traffic operations, how we will operate the traffic. So all those skills, so all those elements and parameters we will discuss in traffic engineering. So it's also include that, all right? So this is traffic engineering. It includes plannings of regulatory measures. Okay. The design and application of control devices. This is how we discuss traffic engineering. The analysis of traffic characteristics, where we need a lot of traffic, where we not, how to control the traffic, how to provide those devices that can control the traffic, where we can install the electric traffic signals, where we can install all those traffic systems to control the traffic. The traffic operations, so it all include in traffic engineering. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के वो ब्रांच है जिसमें हम इंजीनियरिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं टू अचीव द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट्स ऑफ पीपल, ताकि लोगों की महफूजी के साथ और एफिशिएंट मूवमेंट हो। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाएंगे तो पुराने ज़माने में लोग पैदल जाया करते थे, जानवरों पर जाया करते थे, आजकल गाड़ियों पे जाते हैं। तो किस तरह जो मूवमेंट्स होती है वो मुतासिर भी हो, वक्त की बचत भी हो, टू सेव द टाइम, एंड ऑफ कोर्स महफूज भी हो, और मतलब मुतासिर कुन मुअस्सर भी हो। इसी तरह चीज़ों की भी जो आमदोरफ्त हो, चीज़ों की आमदोरफ्त हो वो भी सेफ़ हो, चीज़ों की आमदोरफ्त भी सेफ़ हो, और एफिशिएंट मूवमेंट्स हम इसकी कर सके, ठीक है। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन of control devices, analysis of traffic characteristics and traffic operations. Question number 7. For the movements of two roads, for movements of vehicles at an intersection of two roads, what is intersection? Where two roads can meet at one point, this is called intersection. For example, if there is one road coming in this point, right? If there is one road, तो अगर ये देखे ये पहली गाड़ी है जो यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इस रोड पे ये पहली गाड़ी थी, फिर ये गाड़ी यहाँ पे आएगी, तो ये जो
इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे दो सड़कें एक पॉइंट पे मिलते हैं, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन हमेशा दो सड़कों के बीच में होती है, ठीक है। तो जब मूवमेंट्स होती है व्हीकल्स की, गाड़ियों की हमारे साथ इंटरसेक्शन पे विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ताकि उसमें इंटरफेरेंस में नहीं हो, तो टाइप ऑफ ग्रेड सेपरेटर जनरली प्रेफर्ड इस कौन सा ग्रेड सेपरेटर हम प्रेफर करते हैं? डेल्टा ग्रेड सेपरेटर, ट्रम्पेट ग्रेड सेपरेटर, डायमंड इंटरचेंज ग्रेड सेपरेटर और क्लवर लीफ ग्रेड सेपरेटर। तो क्लवर लीफ एक ऐसा ग्रेड सेपरेटर है जो कि हम क्या करते हैं, जो कि हम दो सड़कों के बीच हम इंटरसेक्शन पे जब गाड़ियाँ गुजरती है बगैर इंटरफेरेंस की, ताकि गाड़ी टकराई भी ना और एक गाड़ी भी गुजर जाए और दूसरी गाड़ी भी गुजर जाए, तो उसको हम कहते हैं वो क्लवर लीफ ग्रेड सेपरेटर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ क्लवर लीफ ग्रेड सेपरेटर। सो it can see that like if I can fix this window, these vehicles are moving and this is a there's a two-way road. So on the one way the vehicles are moving in this direction, and the other way the vehicles are moving in this direction. Similarly, these vehicles can rotate here and goes downward. Similarly, these vehicles can go downside and goes downward. Similarly, these vehicles can rotate and this roundabout goes downward, and the same manner these vehicles can rotate goes downward. So without any interference, this is called clover leaf grade separator, and that's the skills of traffic engineers or highway engineering, right? इस तरह अगर हम देखें दो सड़कें हैं, ठीक है, इस पे गाड़ी इस तरह जा रही है और इस पे गाड़ी इस तरह आ रही है, तो ये गाड़ियाँ यहाँ से जाके नीचे जाती हैं बग़ैर इंटरफेरेंस के इन गाड़ियों के साथ टकराते हुए। ये गाड़ी इधर से जाती है नीचे आती है मेन जो टू वे रोड है, ठीक है, एंड माइट बी टू लेन टू वे रोड। ये गाड़ी इधर से नीचे जाती है और इस तरह गाड़ी इधर से नीचे आती है, तो बग़ैर इंटरसेक्शन के हम ये ग्रेड सेपरेटर प्रोवाइड, इसको कहते हैं clover leaf grade separator. So basically it's an interchange. The clover leaf grade separator is basically an interchange. It's basically a two-level interchange. Like there's so many road experts, and you can ask them what is two-level interchange. They will not understand that. These are the skills I am giving it to you, right? You can ask a lot of assistant directors, SDOs working in different countries, project managers, what are a two-level interchange? These are basically a two-level interchange, right? At which all turns are handled by slip. This is another turn. This is another turn. This is another turn. All turns are handled by slip. इसमें 4 लीव्स प्रोवाइड करते हैं। लीफ पत्ते को कहते हैं, तो पत्ते की जो इस तरह 4 गोलाई इसमें होती है पत्ते में, ठीक है। तो इस तरह इसको क्लवर लीव्स ग्रेड सेपरेटर कहते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन हो गया। एक राउंड अबाउट होता है, ठीक है, वो भी हम इंटरसेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। डायमंड इंटरचेंज भी होता है, ट्रम्पेट भी प्रोवाइड करते, डेल्टा भी राउंड अबाउट से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्लवर लीफ बग़ैर इंटरफेरेंस के, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, उसके लिए मुदाखिलत के लिए हम क्लवर लीफ प्रोवाइड करते हैं। दीज आर राउंड अबाउट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि इंटरसेक्शन ना हो। लेकिन इसमें इस तरह है कि फिर भी अगर ये गाड़ी इधर से आ रही है और ये गाड़ी इधर से जाए तो टक्कर हो सकती है। इस तरह ये दोनों गाड़ियों के बीच में टक्कर हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्लवर लीफ ग्रेड सेपरेटर बगैर इंटरफेरेंस के, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि आपके पास इंटरफेरेंस हो, क्योंकि वो यहाँ की गाड़ी इधर से टर्न लेके नीचे जाएगी, यहाँ की गाड़ी इधर से टर्न लेके नीचे जाएगी, यहाँ की गाड़ी इधर से टर्न लेके नीचे जाएगी, यहाँ की गाड़ी इधर से टर्न लेके नीचे जाएगी, लाइक अ लीफ, 4 लीव्स। ये भी राउंड अबाउट है, इट्स राउंड अबाउट डिज़ाइन। ये ट्रम्पेट है, ठीक है, ट्रम्पेट इंटरचेंज। ट्रम्पेट इंटरचेंज किसे कहते हैं? ये भी ग्रेड सेपरेटर है, इट्स आल्सो ग्रेड सेपरेटर, ट्रम्पेट इंटरचेंज। So what is trumpet interchange? Let's discuss that. So is a road junction that typically use a grade separation and one or more looped ramps to permit traffic on at least one highway to pass through the junction
without directly crossing any other traffic stream, right? तो लेट्स दिस, यानी ये ट्रम्पेट ग्रेड सेपरेटर है और इंटरचेंज, यहाँ से गाड़ी आएगी तो यहाँ से क्या करेगी, लेट मी फिक्स्ड, तो यहाँ से गाड़ियाँ आएगी तो यहाँ नीचे की गाड़ियाँ इधर से जाएगी, अगर ये गाड़ी चाहे तो इधर से जा सकती है, नीचे से भी मेन 2 वे रोड गया हुआ है और इधर से भी गाड़ियाँ ऊपर आ सकती है। तो इसमें 1 लीव दिया जाता है, जो 1 लीव दिया जाता है उसको ट्रम्पेट ग्रेड सेपरेटर कहा जाता है। ये डायमंड इंटरचेंज है। अगर आप देखें यहाँ से गाड़ियाँ इधर भी जा सकती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ इधर जाएगी, यहाँ से गाड़ियाँ इधर आएगी, फिर ये गाड़ियाँ इधर से टर्न लेगी, ये गाड़ियाँ इधर से टर्न लेगी, ठीक है। फिर ये इधर से भी ऊपर आ सकती हैं, इधर से नीचे जा सकती हैं, इधर से ऊपर आ सकती है, इधर से भी ऊपर आ सकती है, ठीक है, और इधर से नीचे भी जा सकती है, इसी तरह इधर से नीचे जा सकती है, ठीक है, इधर से ऊपर आ सकती है। तो इस टाइप के इंटरचेंज को क्या कहते हैं, डायमंड इंटरचेंज कहते हैं। एक ये एग्जांपल भी है डायमंड इंटरचेंज की, ठीक है, और सिमिलरली ये एग्जांपल भी है, ठीक है। For if the ruling gradient on the highway is 3%, that is a camber. Gradient and camber are same thing. The gradient provide a curve of 300 meter radius. For example, we have a curve. So that is 300 meter radius. A is 2%, 2.25%, 2.5%, 2.75%, or 3%. So we will solve this question. So what is mean by ruling gradient? Ruling gradient को design gradient भी कहा जाता है, जिससे हम रोड को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, ये हमारे साथ मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है विद विच द डिज़ाइन अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। रोड के वर्टिकल प्रोफाइल को डिज़ाइनर क्या करता है, डिज़ाइन करता है, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट ये हाईवे इंजीनियरिंग में है और दिस डिपेंड्स ऑन द टेरेन पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द ग्रेड की लेंथ कितनी है, मतलब कितने लेंथ पे हमने ग्रेड प्रोवाइड करना है, स्पीड पे डिपेंड करता है सड़क की, पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल कितना सीसी है, 660 सीसी है, इस पे 1300 सीसी गाड़ी चलेगी, 1800 सीसी, 1500, 1600 सीसी, 2500 सीसी, 3000 सीसी, 4000, 5000, एंड द प्रेजेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, और हॉरिजॉन्टल कर्व का भी इस पे असर पड़ता है। इसके अलावा वर्टिकल प्रोफाइल जो होता है हमारे साथ सड़क का, वो क्या करता है, वो हमें एलिवेशन का परसेंट दिखाता है, ठीक है। इज द परसेंट ऑफ एलिवेशन चेंज अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द रोडवे, ठीक है। जो रोडवे का सेंटर लाइन होता है मेरे पास, तो द वर्टिकल प्रोफाइल ग्रेड is a percent of elevation change along the center line of the roadway. Vertical grades are necessary to assure drainage of storm water. Vertical grades इसलिए ज़रूरी होती है कि हम क्या करते हैं, कि हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम इशोर करें। जब बारिश होती है या जब तूफ़ान का पानी सड़क पे आता है या जब बारिश होती है, तो उस पानी को हम किस तरह सड़क से निकालेंगे, इसके लिए भी वर्टिकल प्रोफाइल ग्रेड की ज़रूरत पड़ती है विद इन द प्लाजा टू इनलेट एंड आउटफॉल लोकेशन, राइट। ये वर्टिकल प्रोफाइल है, एक द वर्टिकल स्केल इज एग्जैजरेटेड। यहाँ पे ये G1 है, ये सेंटर ग्रेड है, ग्रेड लाइन है, ये ओरिजिनल ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जगह पे इतनी कटिंग है, ये इतनी फिलिंग है, फिर इतनी फिर से कटिंग है, फिर इतनी, तो इसको हमने इस तरह वर्टिकल किया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्टिकल प्रोफाइल है, ये दोनों कर्व्स के बीच ये L1 है, फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक कि L2 है, PV L1 PV L2, राइट। तो ये कट एंड फिल को शो करता है वर्टिकल प्रोफाइल। इस तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वर्टिकल प्रोफाइल जो है, मतलब ये एक वर्टिकल प्रोफाइल है, फिर इसके बाद ये कट एंड फिल को शो करता है, ठीक है। ये कहाँ पर मेरे साथ कट आएगी या कहाँ पे मेरे साथ फिल आएगी, अब यहाँ पर ये कट है, ये ग्रेडियंट है, तो कट एंड फिल को शो करता है, ठीक है, वर्टिकल प्रोफाइल। रूलिंग ग्रेडियंट भी बेसिकली मेरे साथ ग्रेडियंट है, ठीक है, ये भी gradient है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ gradient, so where you can provide the slopes, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट्स ही है ना, आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन किस तरह फाइंड करते हैं,
और grade compensation क्या होता है, let's discuss that. Whenever you are using a curve which is less than 30 meters, then you will provide like for example, if I'm making this a curve, so if its length is less than 300 meters, its length is less than 40 meters, then you will use this formula 30, and you have to add the radius of the curve and then divide by 30. So then it gives you the value for grade compensation, right? So to find the grade compensation. So what is grade compensation? To compensate the grade, and if a curve is greater than if a curve is greater than 40 meter, like in this case, where the like in this case, where if this is a starting point, if this is another point, and in this case, if this is my curve, and if as asked in the question that it's greater than 300 meter curve, so it's greater than 40 meter, then you have to if you have to find the gradient or grade compensation, then you have to divide 75, which is taken from different specification of highway engineering. Then you have, and that's been designed by the highway engineers in the past, different books, researchers, and then you divide it by r, which is the radius of the curve, which is in this case we have 300, right? In this question we have 300 meter, so that's our 300 meter, that is our curve. Then you have to divide 75 by 300 meter, right, which is the radius in this case. So as if the ruling gradient on any highway is 3%, so we have discussed the ruling gradient. It is a design gradient. The gradient provided on the curve of 300 meter radius is then the gradient. Basically, if you have given ruling gradient and then you have to find the gradient, then it's called grade compensation. So how you will do the grade compensation? Then grade compensation is that you have to, for that you have to use the formula, which in this case my curve is greater than 300 meter, 40 meter, so it's a 300 meter radius curve of road, which is almost if I to convert to feet, then 300 multiplied by 3.28, so it's 984 feet, almost near about 1000 feet. So it's 984 feet or 300 meter curve. So you have 75 divided by 300, it gives 0.25%. This is a great compensation. That's we do the compensation. That's a formula in this road which has been asking. So then to find the ruling gradient, then grade minus ruling gradient gives you the grade that you want to provide, that camber, the grade you want to provide. Then in this case we have 3%, which is the ruling gradient given in this question, minus the grade which we it's actually the ruling gradient minus minus the grade compensation. The formula is like that way. So in this way the ruling gradient is 3% and the grade compensation is 0.25%, so it gives you 2.75. so this 2.75 is basically the grade. This is actually this gradient which should be provided to the road. This is basically this grade, right? Yeah, this is basically this grade which we're going to provide this for this particular road. So that's the formula, right? So the correct answer is in this case is 2.75. So let's move towards another question. Question number 9 is the minimum. Question number 10 is the minimum ratio of radii of two circular curves. Now what is radius, and what is radii, and what is circular curve, and what is compound curve? There are 4 things associated with that. Let's solve that. Since we are engineers and the Geeks for Geeks presents this circle, so whenever we are studying the circle, we are always thinking about not just the circle. We are not a mathematician, we are civil engineers. So whenever we see this image sort of circle, we will not take it the radius. We will not only just consider the radius, we will consider the radius of curvature from the origin or center point to the
one point of that circle touching the inner point of the circle. It's sort of like center of gravity, like G, like acceleration due to gravity. G is center of the body, like a centroid, like a center, like its origin. Since centroid, acceleration due to gravity, G, gravitational force, different other elements. I will make a tutorial on that in future. But the center of the point, the origin, the center point to the inner point of the circle touches is called radius of curvature. So it's a circle, and in circle we will take this curve. We will consider a curve. Whenever we study curves are derived from circles, as you studied that. Like in this case, the radius of curvature and the center of curvature imaginary. This dot is the center of curvature. Whenever I'm talking the center, in center is called a center point, origin, centroid, center axis, right? But in circle, and if I'm considering the circles and highway engineering or transportation engineering, then I will not just only say the center or origin point. I will say, rather than a radius of curvature, the center of curvature, and the radius will be the radius of curvature, and the center point will be a center of curvature, and the imaginary circle completing the curve, and I will consider a curve. So this is my curve, right? So as my training question, I studied that I have a circle 300 meter. I have a circle 300 meters. So that's my training question. I already studied that, and I find this grade when a ruling gradient was given, and then I have did that grade compensation. So that's how you have to find that. Another thing is I have taken this from my very good friend Suleiman Khan, his channel YouTube, SLK Tuts, Engineer Boy. So in this case, if I see that this R is not, he just write that R radius. This just not only be radius, because he studied curve, he should know that. He even don't know. Maybe he know that, but he should write it not only radius, but he should write the radius of curvature. Instead of radius, he must have, the author must have give this thumbnail on his video, radius of curvature. And that's taken from the circle. Now what is dome? What is dome? What is ellipse? What is semicircle dome? Right? What is hemisphere dome? What is semisphere dome? These are, I will make a tutorial on that and some other lecture in future. But it's a curve, that's a deflection, and that's a radius. That's an angle found between two radii intersecting. Now it's a radius, but when it comes to two radius, it's a radii. So what is right now radii of the curve? And what is compound curve? Is it compound curve? That's a task for you guys. Write in the comment box. That's a compound curve. So we have one angle made here, one angle made here, right? And that's been the curve. It's called compound curve. So correct answer is 1.75. So the correct answer is not C. The correct answer is the B answer, right? That's the correct answer, 1.5. But how? Let me explain to you. देखिए, अगर ये कर्व है और ये कर्व पे सड़क जा रही, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे और बी स्क्वायर फार्मूले से, राइट? हमने इससे पहले मालूम भी किया था ब्रेड्थ ऑफ द व्हीकल एंड वेलोसिटी. तो सुपर एलिवेशन तो एक अलग चीज़ है, बाज़ औक़ात जिसको ई भी कहते हैं या एच भी कहते हैं, ठीक है? और उसके मैक्सिमम प्रोविजन को भी हमने चेक किया था और मिनिमम को भी. एनी हाउ, तो बेसिकली जो हमारे साथ रेडियाई होते हैं, दो सर्कल्स, एक रेडियस, जब एक से ज़्यादा रेडियस हो जाए तो उसको हम रेडियाई कहते हैं. बेसिकली रेडियस और रेडियाई में क्या फ़र्क है? रेडियस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, रेडियाई प्लूरल के लिए यूज़ होता है. तो इसमें फ़र्क क्या है? अब ये देखिए, ये एक सर्कल है, लेकिन इसमें अब एक और भी सर्कल है. तो अब इसमें दो रेडियस है, एक ए बी भी एक रेडियस है और ए सी भी रेडियस है, ठीक है? तो ये क्या है? ये रेडियाई प्लूरल है, ठीक है? दो सर्कल्स का मजमूआ है. इसी तरह अगर मैं ये देख लूँ, ठीक है, ये तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ये सर्कल दिखाऊँ तो इसमें ओ डी भी रेडियस है और
यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, तो इसमें एक ये 1 2 3 3 रेडियस, तो ये रेडियाई है, ठीक है, जमा है ये, ठीक है। इस तरह और भी इसके एग्जांपल्स है रेडियस और रेडियाई के, बट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दैट मच। एंड ये भी है, ये तो खैर ओ कहता है कि ओ ए आपके पास क्या है, रेडियस है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। बट एनी हाउ जो हमारे साथ रेडियस होता है जब हम मिनिमम रेशियो की तरफ बात आते हैं, ठीक है, ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कर्व्स ऑफ अ कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में मेरे पास 2 सर्कुलर कर्व्स है, उनकी रेडियाई की मिनिमम रेशियो कितनी देनी है। तो इसमें जो फर्स्ट कर्व है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कर्व R1, चाहे जो भी नाम होना, नॉट एक्सीड 1.5 R2। मतलब अगर एक कर्व R1 है, दूसरा R2, तो जो पहला कर्व है उसका रेडियस 1.5 टाइम्स सेकंड रेडियस से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वो रेशियो है। ये स्किल्स मैं ढूंढ के आपके लिए पूरे हाईवे इंजीनियर्स को न छोड़ के, पूरे वेबसाइट्स को न छोड़ के ये स्किल्स आपके ला रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रमोट करना है, इसकी डाउनलोडिंग करनी है, पूरे फ्रीलांसिंग्स या वेबसाइट्स या Amazons, eBays, Udemy, जितनी Facebook, TikTok, make this on from all viral it, because that's just assets I'm giving to you. Nobody will give you anywhere in the world like this. इसमें कहता है कि if the sharper curve has a very less radius, अगर एक sharper curve है, बहुत sharp है, तो उसका radius कम है, then the ratio will be greater than 1.5. Thus a moving vehicle from a flatter curve, अगर flatter curve से to a much sharper curve आता है तो उनको discomfort महसूस नहीं होगा। इसके अलावा अगर to ensure a safe and smooth transition from curve to curve, अगर एक curve से दूसरे curve में जाए तो जो flatter curve है उसका radius should not be disproportionate to the radius of the sharper curve। मतलब normally 2:1 या preferably मतलब अच्छा है कि अगर हम 1.5:1 कर ले, should be adopted, ठीक है। तो जो 1.5 है, जो पहला कर्व है उसका रेडियस दूसरे कर्व से 1.5 टाइम तजावुज़ नहीं करना चाहिए, तो ये 1.5 देना चाहिए, ठीक है। 1.5 इज यानी अगर एक कर्व फ्लैटर है और दूसरा कर्व क्या है, वो शार्पर है, तो जो फ्लैटर कर्व है, जो पहला कर्व है, उसकी रेडियस दूसरे कर्व से 1.5 टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट महसूस होगा।